Hello students, welcome back to the class. In the last class we discussed regarding electronic configuration of elements. We discussed how the atomic orbitals are filled up in the increasing order of their energy. Then we discussed Hund's rule also, which is applicable for degenerate orbital. I पढ़ी electronic configuration विषय I discuss करथिलु for elements up to atomic number 20. Then I gave you some assignments. Thankfully many students have send it, so thank you very much. So you keep sending the assignments like this. It will be very good for the online classes because I will be interested to teach you. So next we will discuss the exceptional electronic configuration of chromium and copper. So as per the rules we discussed up to last class, we know how to write down the electronic configuration of chromium and copper. Chromium is having atomic number 24, copper is having atomic number 29. Chromium atomic number है 24, copper है 29. So first let us write down the electronic configuration of chromium, atomic number 24. That means we have to arrange 24 electron in different subshells: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Up to this it is argon, then 4s2, 3d4. Okay, so this is the electronic configuration of chromium. It should be the electronic configuration of chromium. So this is the electronic configuration of argon up to 3p6. It is argon. So in other way we can write the electronic configuration of chromium as argon within the square bracket, then 4s2, 3d4. So this should be the electronic configuration, but it is wrong because it is an exception. This is not correct. Then what is correct? Now argon within the square bracket, then 4s1, 3d5. So this is the correct one, correct electronic configuration of chromium, not this one. This is incorrect. This is incorrect. Okay. So next, copper atomic number is 29. So what should be the configuration? Now 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 up to argon. Then 4s2 because 4s is filled up first, then 3d is filled up, 3d9. So this should be the electronic configuration of copper. It hava katha copper up to this 3p6. It is the configuration of argon again. So argon within square bracket, then 4s2, 3d9. So this should be the electronic configuration of copper, but this is wrong one. This is also wrong one. So what is the correct one? Now argon 4s1, 3d10. Okay. So this is the correct electronic configuration of copper. So for chromium it is argon 4s1, 3d5. For copper it is argon 4s1, 3d10. So these are the exceptions and the correct electronic configuration of chromium and copper. Then next let us know the reason behind it. A karan kon. Why they behave exceptionally. So for this we have to write down the electronic configuration by orbital notation. Orbital notation अच्छा देखिबा. Orbital notation में देखिबा for first one, that is your chromium, it will be argon within square bracket, then 4s, then 3d has 5 orbitals. जानिछो 3d रो 5 टा orbital अछि, 3d रो 5 टा orbital अछि. ता नाम गुडा तुम मन रखिया कहितली रखिथिबो तो बेनियाती कोन. Let us see whether you remember it or not. Now 3d xy, 3d yz, 3d xz, 3d x square minus y square, then 3d z square. So these are the 5 orbitals of 3d. 3d xy, 3d yz, 3d xz, 3d x square minus y square, 3d z square. Okay. So if you will go for the electron configuration, हवा कथा कौन ना 4s2
3d4. So in this case, what happens? Look, the electrons are singly filled as per Hond's rule. It will be applicable in Hond's rule. It will be applicable for Hond's rule. Hond's rule will be applicable here. What hoch dekho? Now Hond's rule le na the degenerate orbital. These are having same energy. Orbital energy same. तो कौन कोई आमे चुआ degenerate orbital. So as they are having same energy, so Hond's rule will be applied. That means all the orbitals will be singly filled. Then only the pairing will take place. Positively Hond's rule sir कौन ना degenerate orbital case रे कौन हबो ना प्रत्येक orbital आगे singly fill up हेबे तापरे pairing start हबो जदि अधिका इलेक्ट्रॉन अछि तो. So as per Hond's rule, these orbitals are singly filled. But एडी कौन होछि देखो चारिटा orbital ले singly fill up होइछन्ती गोटे orbital फांका अछि. So there will be maximum repulsion. So repulsion means increase in energy, decrease in stability. तो stable condition केतरा आसीबो ना when we can add another electron here. एठी आउटे unpaired electron हम add कर दे परिबा, then it will be very stable. And stable means lower energy, so lower repulsion and more stability is caused when we have 3d5 structure. ताले से इलेक्ट्रॉन टा जोटा आसीबो 3dz स्क्वायर को कोड आसीबो, that will come from 4s. ताले कोन हिजबो स्ट्रक्चर देखो ना 4s1. So now the structure will be this one, 4s1 3d5. So electron from 4s will be going here. काहे कि ना कहिथिले चारटा हाफ फील्ड रहउचंती बहुत हाई कोन हबो रिपल्शन हबो, एनर्जी अधिका हबो, स्टेबिलिटी कमी जो. So for greater stability कोन हबो ना पांचटा का हमर हाफ फील्ड कंडीशन दरकार. So this is 3d5 configuration, 4s1 3d5, and 3d5 condition is called half filled condition. That means all the orbitals are singly filled. So this is the half filled condition when all the orbitals are singly filled. This is a very stable condition. This is a very stable condition. Half filled condition or full filled condition, they are the most stable conditions. तेणु सब बेले ऑर्बिटल चाहिए आइदर दे विल बी हाफ फील्ड और दे विल बी फुल फील्ड. सेमती एठी आसीबा छुआ कन्फिगरेशन कोन हिजबा देखो ना आर्गन then 4s2 3d 5. Just you have to write down the names. कौन कौन होगा 3d xy 3d yz 3d xz 3d x square minus y square 3d z square. ओके तो एठी कोन थिला छुआ 4s2 3d9. ताले 3d9 ले असुविधा कोन होछ देखिबा आगे सब गुडा सिंगली फिल अप हो गेले 9टा इलेक्ट्रॉन जीवो आगे सब सिंगली फिल अप हो जिवे तापरे पेयरिंग स्टार्ट हो. देन द पेयरिंग विल स्टार्ट. कोन हेउछ देखो चारिटा पेयर्ड हे रहउछन्ती गोटे अनपेयर्ड हे रहउछ. अगेन दिस कंडीशन लीड्स टू मोर एनर्जी, हायर एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन. एनर्जी बहुत बढ़ी जिवो काहे ना रिपल्शन बढ़ी जिवो. रिपल्शन बढ़ले कोन हो एनर्जी बढ़िबो, स्टेबिलिटी विल बी लोअर. So in order to increase the stability, what should be there? Now it should be paired up. तेणु आउटे इलेक्ट्रॉन को दरकार होची कोड आसीबो अगेन फ्रॉम 4s. So what is the correct configuration then? Now 4s1 3d10. So what will be the configuration? Now 4s1 here it will be 3d10. So this 3d10, that means all the orbitals are fulfilled, is known as fulfilled condition. So these half filled condition, that is 3d5, and fulfilled condition 3d10 are most stable. So बहुत stable. So for that stability, तेणु हमर एक्सेप्शन टा आछी कोन होचंदी ना गोटे इलेक्ट्रॉन सरे 4s रू नै कि एठी हाफ फील्ड फुल होची एठी फुल फील्ड टा होची. So you have to remember the cause of exception is extra stability of half filled and full filled orbital. So what is the cause? Cause तो मन रखे पड़िबो. It is due to the exceptional electronic configuration of chromium and copper is due to extra stability of half filled, that means 3d5, and full filled, that is 3d10 orbital. Sei pai empty hochi configuration. So reasons likhiba. Reasons cause first hochi extra stability
of half filled and full filled orbitals कौन पाई फॉलोइंग सिमेट्री एटू गोटे छुआ आसला सिमेट्री सिमेट्री रोल कौन देखो ये सुंदर भाव सजाई देछि चारटा थिले तुमको भल दिसतुला ना पांचटा अधा हला भल दिसछि पांचटा अधा हला मोर सिमेट्री एटी सेंती चारिटा पेयरिंग हेतिला गोटे अनपेयर्ड हेतिला इट इज नॉट सिमेट्रिक केतल सिमेट्रिक हबो व्हेन दे विल बी ऑल पेयर्ड अप सो सिमेट्री मींस व्हेन दे आर अरेंज्ड इन ए परफेक्ट मैनर इन ए परफेक्ट मैनर ताको आजे हम सिमेट्री सो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी मन रखो छुआ सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी जो जिनसटा जेते सिमेट्रिकल सेटा सेते स्टेबल सो हायर इज द सिमेट्री बेटर और ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी तेणु सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी तेणु कोन लिखम फर्स्ट रीजन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड माने ए केस कोन होछा 3d5 एंड फुल फील्ड ए कंडीशन कोन होछि 3d10 orbitals following symmetry as you can add it as symmetry leads to stability so this is the first reason or first cause second होछि exchange energy let us know what is exchange energy so look these 5 electrons they are in the same d-generate orbital they are having same energy emanଙ୍କର energy सब समान they are called d-generate orbitals that means they can readily interchange their position ए इलेक्ट्रॉन टा readily आस परिवो एठी की भी आस परिवो एठी की भी आस परिवो एठी की भी आस परिवो why now because they are at the same energy level हैला because they are at the same energy level they can readily interchange their position the electrons present in the d-generate atomic orbital can readily interchange their position so during this interchange a great amount of energy is released that is known as exchange energy ए इंटरचेंज करा कोन हुए एनर्जी रिलीज हुए जो एनर्जी तो हम कहू एक्सचेंज एनर्जी अजानिच सिस्टम विषय जेते परिमाण अमाउंट से बाहर एनर्जी पाउची दैट इज मोर प्रिफर्ड सो ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल गेट देन इट विल प्रिफर इट जेते अधिक पाइबो सेते प्रिफर करिवो तेनो को केस रे हाईएस्ट एनर्जी बाहरची ना 3d5 आउ 3d10 ले सो इन केस ऑफ हाफ फील्ड कंडीशन दैट इज 3d5 and 3d10 maximum exchange energy is possible maximum exchange energy केतरे पाउची से जेतले समस्त हाफ फील्ड रहउछथि न समस्त फुल फील्ड रहउछथि so in these two cases maximum exchange energy is possible that's why the system prefers these two conditions कोनटा को ना either half field को prefer करे नले full field को करे so highest एक कोन लिखो छुआ highest exchange आगे exchange energy definition लिख दो you write down the exchange energy definition what is exchange energy definition now the amount of energy released when the electron interchange their position within the d-generate atomic orbitals the amount of energy released when the electrons they exchange their positions within the d-generate atomic orbitals okay that is called exchange energy and highest exchange energy is released in half filled or full filled orbitals that's why the system prefers half filled that is 3d5 or full filled that is 3d10 so these are the causes of exceptional electronic configuration of chromium and copper जो तुमके के पचारे छुआ you have to write down these two causes or reasons extra stability of half filled and full filled orbitals following symmetry as symmetry leads to stability as symmetry leads to stability then next लिखो छुआ exchange energy what is exchange energy now the amount of energy released when the electrons in the d-generate atomic orbital interchange their position ताले हाईएस्ट एक्सचेंज एनर्जी जते बाहरिबो सिस्टम सेते प्रिफरेबल होबो केतला हाईएस्ट एक्सचेंज एनर्जी बाहरची ना व्हेन सिस्टम इज इन हाफ फील्ड दैट इज 3d5 और फुल फील्ड दैट इज 3d10 कंडीशन तमे एटा लिख दो छुआ हाईएस्ट एक्सचेंज एनर्जी इज रिलीज्ड इन हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स सो दैट्स व्हाई these two that is d5 and d10 configuration is more preferred okay students so this is all about your electronic configuration
exceptional electronic configuration of chromium and copper, and the causes behind exceptional configuration. Then we will discuss the shape of orbitals and nodes or nodal planes. Okay. So next student will discuss shapes of orbitals. Shapes of orbitals and nodes or nodal plane. So first let us discuss the shape of s orbital. We have already discussed that s orbital is spherically symmetrical in shape. That means what is an orbital? Suppose this is the nucleus. Suppose this is the nucleus. The dot represents the nucleus. Will represent the probability of finding an electron by these dots. This is called electron charge density or electron dot density. So when it is given a boundary, it is called an orbital. So when we assign a boundary to this, this is called an orbital. So this is the shape of s orbital, which is spherically symmetrical in shape. That means in all possible directions it is spherically symmetrical in direction. Okay. So how to know it? Now for that we have to draw a graph between psi square, mod psi square, that is probability density. What is psi square? The probability of finding an electron in a certain region. Then versus r, that is the distance from the nucleus. Distance from the nucleus. So for 1s, the graph will be like this. For 1s, the graph will be like this. For 2s, the graph will be like this. Mod psi square, probability density versus distance from the nucleus r. Then this is for 2s atomic orbital. So follow karo. So this is r, distance from the nucleus. So near the nucleus, what is psi square? The probability density function. That is the probability of finding an electron. It is electron पाइबार probability जते अधिका psi square value सेते अधिका. So psi square value कोठी अधिका होछि देखो near the nucleus. Nucleus तो हम जते दूर को जाउछु कोन होछि तापर देखो एटी psi square value कते होछि 0. That means the electron charge density is almost 0 when it goes apart or far away from nucleus. Okay, तेनो एटी देखो छ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बा डॉट डेंसिटी तो देखौछि सबटो बेसी कोठी अछि नियर द न्यूक्लियस. जते हम दूर को जिवु ताले कोन हबो तार प्रोबेबिलिटी कमी कमी 0 हो जिवो. से किंतु 2s देखो इनिशियली बहुत हाई अछि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. तापरे एठी टच करि अछि ए जगह रे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी केते 0 हैला. तेनो एठी कोन होछि छ नोड बा नोडल प्लेन. तापरे कोन होछि पुनी अगेन बढुछि पुनी आसकी पुनी 0 हो जाउछि आ उथरे नोडल प्लेन नै जाउछि. सो दुईटा पोजीशन पहुंची जोठी नोड रोची. एठी गोटे नोड आछि. नोड का कहयो ताले द रीजन node is almost opposite to orbital. Orbital comes called the region or space in surrounding the nucleus where the probability of finding electron is maximum. Same thing, node definition called about the region or space where the probability of finding an electron is 0. That is called a node or nodal plane. ता माने 1s रो गोटे भी नोड नाही, टोटल नोड नाही, एठी गोटे नोड अछि. Okay, so I am deleting these graphs, but these graphs they give you the details regarding shape of s orbital. Okay, ताको मो लिवाई दोछि छ बुझ परलो. Probability density function, probability of finding an electron versus r, that is distance from the nucleus. जेतरा nucleus पाखर रहउछि probability high रहउछि, nucleus दूर को गला को probability 0 हो जाउछि. That means probability of finding electron is 0. नोड आस जाउछि. तापरे एठी कोन होछि इनिशियली बहुत अधिक रहउछि कमी कि 0 हो जाउछि पुणी बढ़ुछि आ थरा आछि. ताले एई दिका एक्जेक्टली रिप्रेजेंट केमति करबा ना 1s कंडीशन देखबो कोन होबो आमी ताकू डायग्राम ड्रॉ करबा. दिस इज the shape of 1s. এটা হবো 1s র shape 1s. n ভ্যালু যেতে বড়িবো সাইজ সেতে বড়িবো এনার্জি সেতে বড়িবো. তাহলে 2s পাই কোন হবো না সেই সেম মধ্যে রইলা ইলেকট্রন তারপর রইলা ফার্স্ট ইলেকট্রন চার্জ ডেনসিটি বহুত अधिक আসছি हैला.
तापर कोन हो गुटे एरिया आसीबो गुटे रीजन आसीबो where the probability of finding electron becomes 0 एटा होची सेही रीजन तापर पुनी अगेन probability of finding electron आसीबो इलेक्ट्रॉन आउथरे पाइबार चांसेस आसीबो तो 2s is bigger in size and energy as compared to 1s सब ऑर्बिटल में सेटा लागू जते n वैल्यू छुआ बढ़िबो n वैल्यू जते बढ़िबो से अनुसार कोन हबो ना तुमर probability of finding electron बढ़िबो एवं ता साइज एंड एनर्जी बढ़िबो देखो छुआ एटा होची shape of 2s orbital so 2s is bigger than 1s सेमि 3s बोले से आउरी बड़ा हो so n value जते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू बढ़िबो से अनुसार साइज ऑफ द ऑर्बिटल बढ़िबो दैट यू हैव टू रिमेंबर हायर इज द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर इज द साइज ऑफ द ऑर्बिटल ओके बट साइज इज स्फेरिकल रहइबो बट डिफरेंस कोन एठी देखो सबडे इलेक्ट्रॉन पाइबार प्रोबेबिलिटी समान रहउची सबडे इलेक्ट्रॉन पाइबार प्रोबेबिलिटी समान रहउची सो नंबर ऑफ नोड्स इज 0 एठी नोड्स नाही इलेक्ट्रॉन पाइबार प्रोबेबिलिटी जो 0 तक हम नोड्स को तेनु 1s रे नंबर ऑफ नोड्स इज नील बट 2s रे देखो एठी गोटे मझिरे रीजन आछी जोठी नोड आछी नोड का कहबा where probability of finding electron is 0 जोटी इलेक्ट्रॉन पाइबार प्रोबेबिलिटी 0 थिबो ताको हम नोड बा नोडल प्लेन कहबा हैला सो मन रहिला छ 1s और 2s के डिफरेंस कोन 3s भितरे एमदी जते हमें n वैल्यू 1s n वैल्यू 1 तो साइज कम 2s n वैल्यू 2 साइज आउते अधिका बट विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ n वैल्यू द साइज एंड एनर्जी इंक्रीजेस 2s रो 1s भितर मेन डिफरेंस कोन ना 2s केस रे गोटे नोड आछी सेमि 3s बोले दुईटा नोड आछिबो so number of nodes will go on increasing so this is all about your shape of s orbital then we will go to shape of p orbital has a dumbbell shape p orbital so this is shape of s orbital then p orbital has dumbbell shape p orbital has dumbbell shape how it looks like it looks like this at the center there is nucleus at the center rela chwa nucleus at the center rela chwa nucleus and these are the regions where the probability of finding an electron is maximum so जानि जो p रो तीनटा पॉसिबल डायरेक्शन अछि जो एक्सिस एलंग रे ओरिएंटेशन हबो मनकर एटा होची z एक्सिस हला z एक्सिस ताले एटा हबो pz सेमती x एक्सिस सॉरी x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस सेम से कोन हबो px py pz हला सो देखो छुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कोठी आछि नाही लोब्स गुडा रे सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द लोब्स बट एठी कोन होची सेंटर रे जोटी टच करची जे की जोटी टच होची सेठी कोन होची न्यूक्लियस अछि सेठी कोन अछि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 सो देयर इज ए प्लेन और एंगुलर एरिया where the probability of finding an electron is 0 so this area where the probability of finding an electron is 0 is also called node or nodal plane कोन डिफरेंस कोन ना इट इज एन एंगुलर नोड ताले नोड ता दुई प्रकार हो छुआ nodes will be of two types one is radial node जानिया केमति रेडियल नोड कोटा ना इट इज spherical in shape formula number of radial nodes is equal to मन रखिबो छुआ n minus l minus 1 number of radial nodes is n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर minus l azimuthal क्वांटम नंबर minus 1 से अनुसार फार्मूला पका देखो छुआ 1s पाई केते होची n वैल्यू 1 l वैल्यू होची 0 1 minus 0 minus 1 केते हो 0 तेनो देखो 1s रो रेडियल नोड नाही टोटली 2s पाई आसीबा छुआ 2s पाई n वैल्यू होची 2 l वैल्यू होची 0 सो 2 minus 0 minus 1 तेनो केते होची 1
सो 2sh 1 रेडियल नोड तेनु जो रेडियल नोड शेपटा होची स्फेरिकल जो नोड रे शेपटा होची स्फेरिकल ताको कहबा छुआ रेडियल नोड ता फार्मूला मन रखिबो n - l - 1 एठी कोन होची देखो प्लानर नोड आछी ताको कोन कहबा एंगुलर नोड ताले सेकंड होची छुआ एंगुलर नोड ताले एंगुलर नोड रो साइज कोन हेतिबो चिन्हवा केमती ना इट मे बी प्लानर और कोनिकल इन शेप डी केस रे कोन हबो कोनिकल हे जिवो प्लानर भी रहबो डी केस रे आ कोनिकल भी आसीबो हला नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फार्मूला होची छुआ इक्वल टू l अजिमुथल क्वांटम नंबर जहा एंगुलर नोड्स से बुझियला तो कोनिकल से केमती आसी छुआ मानकर गोटे एग्जांपल देबी तुमको नेक्स्ट आसीबा d ऑर्बिटल शेप होची डबल डम्बेल शेप डम्बेल लिखी छ जिम रे उठाती डबल डम्बेल शेप दुईटा डम्बेल मिसले जा या शेप कोन या शेप होची छुआ डम्बेल शेप आ कोन कहबा छुआ डम्बेल शेप कार p रहउची डम्बेल शेप d रहउची डबल डम्बेल शेप मन का छुआ देखिबा dz स्क्वायर रो शेपटा केमथि हो देखो so this is the shape of dz square so this is the shape of dz square orbital okay so here the probability of finding electron is maximum so this is the shape of dz square एठी कोन होछा जो नोट आसीबो इट विल बी कोनिकल इन शेप कोन चीज दुई प्रकार शेप हे परिबो एठी तुमको देखे दिछि ऑलरेडी प्लानर शेपटा केमते होछि एई केस कोन हबो छुआ द नोड विल बी इन द शेप ऑफ ए कोन शेप रे नोडटा अछि हला सो एंगुलर नोड केमते जानिबो इट विल बी प्लानर जेमति देखैछि छुआ px बा py बा pz रे गोटे प्लेन रे गोटे देयर विल बी प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 ताको हम कहबा एंगुलर नोड इन केस ऑफ dz स्क्वायर कोन होछि ना गोटे प्लानर नोड भी रहउछि वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 and there is a conical node also conical shape रे रहउछि एंगुलर नोड तो एंगुलर नोड दुई प्रकार हे परिबो प्लानर और conical shape फार्मूला होछि l रेडियल नोड स्फेरिकल इन शेप होछि l - 1 ताले टोटल नंबर ऑफ नोड्स केते होछि देखो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एन ऑर्बिटल इक्वल टू केते होछि देखो दुई प्रकार नोड रहिबे कहछि रेडियल नोड आ एंगुलर नोड मिसै देबो छुआ रेडियल नोड केते अछि n - l - 1 प्लस एंगुलर नोड केते अछि l मिसै देबा l will cancel out what will be the total number of nodes ना फार्मूला मन देखो छुआ n - 1 so you have to remember this formula mostly question is asked find out the number of nodes even find out the number of radial nodes or angular nodes in this orbital करि परियो छुआ एग्जांपल दवा मन करो आछबा 2px 2p रो नोड्स बाहर करबा 2p रो नोड्स बाहर करबा 2p n वैल्यू होची 2p पई l वैल्यू होची 1 सेमति p रो छुआ जते n वैल्यू बढ़िबो प्रत्येक ऑर्बिटल पई सेना समान जते n वैल्यू बढ़िबो तार साइज आ एनर्जी बढ़ी चली 2p रो देखो n वैल्यू होची 2 l वैल्यू होची 1 ताले रेडियल नोड केते हबो 2 - 1 केते 0 तेनु 2p रो रेडियल नोड नाही एंगुलर नोड केते आसीबो इक्वल टू l एंगुलर नोड गोटे आसीबो सो आई थिंक यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स व्हिच आई विल गिव यू एज असाइनमेंट्स ओके सो स्टूडेंट्स this is all about your shape of orbitals मन रखियो छुआ f orbital has very complex shape हम ताको गुरु जीवानी बेसी but you can handle it that means you can find out the radial nodes and angular nodes in f orbital but this is all about the shape of different orbitals s spherical in shape जते नंबर बढ़िबो n रो वैल्यू बढ़िबो सेते साइज बढ़ी जिवो तापरे p डम्बेल शेप सेठी प्लानर बा एंगुलर नोड आसीबो जते p बराबर 2p रो साइज हला या 3p हला कोन हो आ साइज बड़ होई जिवो साइज विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली एनर्जी विल इंक्रीज सेमती d रो कोन डबल डम्बेल शेप
सेमती प्रत्येक थर n वैल्यू बढ़ले तीनटा चारटा ऑर्बिटल ले n वैल्यू विथ इंक्रीज इन n वैल्यू साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस. So students, this is all about shape of orbitals, and with this we conclude the atomic structure. In the next class we will start periodic classification of elements. So see you in the next class. Thank you very much.